guys, this is your host Rabia Tahir, and you are listening to the Ranga Rants. I hope this episodes give you the midweek energy you need for the rest of your week. We'll talk about fall and the things you can do in fall because fall started and I love fall and I know a lot of us love fall. Fall and winter are a very pleasant months in Pakistan, especially Punjab or Sindh के area में. I know कि northern Pakistan वाले can't relate to that. लेकिन पंजाब और सिंध में fall is a time or winter is a time that people really enjoy and people wait for it. और इस वजह से I think you can be more happy around this area and you can celebrate it and you can be happy and you can romanticize it, and I'll tell you how, what are the things that you can do to make it better for you. So stay tuned or stay in touch, and I'll see you guys after a break, or we talk about everything and anything. So fall, autumn, the time between September to mid-November, I guess. I don't know. Mid-November, end November, or the end of October. You guys have to tell me कि for you how much is fall. मतलब fall कब खत्म होता है? Obviously, in technically in Pakistan, November mid तक जाता है या November end तक भी कभी-कभी चल जाता है. I don't know how it would be like. सितंबर में कभी भी fall start नहीं होता, लेकिन इस बार 14 सितंबर को I think the fall was here. The fall started क्योंकि उस दिन बारिश हुई और उसके बाद से every single day has been pleasant, और it's not like कि बहुत ज़्यादा गर्मी है. लेकिन before we get into all of this, I just want to say कि what I say in almost every podcast of mine when I'm talking about these things, कि it's not like कि I am talking about big changes in life और ये कर लो, इस पे इतने पैसे लगाओ, इतने पैसे लगाओ, and these are the certain activities that you have to do to enjoy your life. I'm literally talking about the things we do day to day. It's more about your approach towards things, your thought process towards things. Agar if you're doing those things with a positive thought process, there's literally no change between the things you do in summer and the things you do in fall. Like, if you have the mindset ki oh fall, and you do it with such energy, or if you see a lot of people that talk about romanticizing life, उसमें यही होता है कि they are doing things that they do every single day, but they are taking pleasure in it and they are having fun while doing it, and that makes it exciting. When you will have this approach, जैसे जब भी whenever new season approaches, I'm personally really excited. Even जब summer भी आ रहा होता है, I try to make myself excited for it, कुछ ना कुछ सोच के कि oh, I'll get to do this or that I cannot do in winter. So that makes me want to look forward to summers, but now we would never want to go in future or never would want to look forward for the future, or time guzara, you have to go for the next day, for the next year, for the next month, for the next season. So if you will search for the things that would excite you for that time, तो आपके लिए वो चीज़ अच्छी होगी, you that would make the time enjoyable. तो इवन तो जब भी आप अपने किसी ज़िंदगी के फेज से निकल रहे होते हो और नेक्स्ट फेज में जा रहे होते हो, इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट द नेगेटिव थिंग्स और इंस्टेड ऑफ सीइंग कि ओ आई विल मिस दिस इन माय दैट हैपेंड इन माय प्रीवियस फेज, look forward to the things that are good and that makes you excited, or there would be a plenty of things that would make you excited for fall and autumn, क्योंकि winter and fall are the most beloved season in पाकिस्तान. क्योंकि पाकिस्तान में उस तरह की शिद्दत की गर्मी नहीं पड़ती. मैं वैसे जनरलाइज कर रही हूँ पाकिस्तान को, सिंध और पंजाब और आई डोंट नो मे बी बलूचिस्तान टू, बट नॉट खैबर पख्तूनख्वा. तो नॉर्दर्न एरियाज मतलब पीपल कांट रिलेट टू इट, आई एम सो सॉरी. उनके लिए मुझे लगता है कि समर्स आर मोर enjoyable, लेकिन फॉर अस विंटर इज़ अ टाइम वेयर वी इन रियली रियली enjoy. और इस वजह से मुझे लगता है कि ऑल ऑफ अस शुड लुक फॉरवर्ड टू इट, एंड आई नो कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ इंडियंस लिसनिंग टू दिस टू, तो मुझे लगता है कि इट्स द सेम फॉर इंडिया और एनी, और मुझे लगता है इफ़ यू आर लिसनिंग फ्रॉम बांग्लादेश, तो आई थिंक इट्स द सेम फॉर बांग्लादेश एज वेल. But even if I have seen people who live in other countries being excited falls, तो मुझे लगता है कि for every single person fall is exciting and it should be exciting. लेकिन for Pakistanis, I think if winter especially have people love winter here क्योंकि obviously it's enjoyable, it's pleasant or it's fun. तो इस वजह से मुझे लगता है कि you need to have this mindset कि whatever era I'm entering, उसमें ऐसा नहीं होगा कि माई लाइफ वुड ड्रास्टिकली चेंज और मुझे बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए इंजॉय करने के लिए. इट्स लिटरली योर अप्रोच टूवर्ड्स थिंग्स दैट हैव टू चेंज, एंड वंस यू स्टार्ट टेकिंग प्लेजर इन द लिटिल थिंग्स और द थिंग्स जो कि आप खुद अपनी एफर्ट से थोड़ी सी चेंज कर सकते हो, एंड मतलब कि दैट कुड बी इंजॉयबल फॉर यू. तो इसलिए मुझे लगता है कि दैट वुड मेक थिंग्स बेटर फॉर यू, एंड दैट इज़ वॉट
it means to romanticize life or romanticize whatever is coming in your life. I personally romanticize weather मतलब कि really a lot. तो fall, autumn. Now, the best thing about this whole, अब I am not talking about winter, और मैंने इस चीज़ पे बहुत सोचा है कि मैं, क्योंकि I want to make a separate episode for winter, and winter and fall is different. तो इस वजह से जो थिंग्स आई एम टॉकिंग अबाउट इज स्पेसिफिकली फॉर फॉल, तो आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट फॉल, लेकिन मैं बात एक्चुअली विंटर की कर रही हूँ क्योंकि दे आर टू डिफरेंट टाइम्स. अच्छा, तो फॉल आई थिंक इज द परफेक्ट वेदर टू डू आउटडोर एक्टिविटीज. इफ यू आर इन योर कैंपस तो मुझे लगता है कि फॉल इज द टाइम जब आपको कहीं आप आउटडोर कंफर्टेबली बैठ सकते हो क्योंकि summers में obviously you cannot sit outside in that in in क्या इन फ्रंट, नॉट इन फ्रंट, लेकिन उस सूरज के नीचे. आई डोंट नो. अच्छा, आप जो है समर में इतना कंफर्टेबली ऑब्वियसली बाहर नहीं बैठ सकते, बिल्कुल भी नहीं कंफर्टेबली बाहर बैठ सकते, और विंटर में भी यू कैन नॉट सिट आउटसाइड क्योंकि इट्स ग्लूमी एंड देयर इज नो सन एंड मतलब वो सब कुछ. तो इस वजह से मुझे लगता है कि दिस इज द परफेक्ट वेदर वेयर यू कैन लाइक सिट आउटसाइड एंड चिल, और देयर इज लाइक चिल ब्रीज जब शाम का टाइम हो रहा होता है एंड यू आर हैविंग फन एंड इट्स एंजॉयबल. तो मुझे लगता है कि ये महीना, ये टाइम, ये सीजन बहुत अच्छा है कि अगर आपने कोई आउटडोर एक्टिविटी करनी है, if you want to do picnic, if you want to do barbecue, if you want to travel to some place, or if you want to like do a road trip, or road trip ऐसा आप समर में भी कर सकते हैं if you can afford AC in a car. तो I don't know, लेकिन मतलब अगर आपने कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करनी है, if you want to go to a park, or you want to do shopping, or you want to go to old Lahore, और आप अनारकली फिरना चाहते हैं, मॉल रोड फिरना चाहते हैं. आई डोंट नो डिफरेंट सिटीज़ में क्या होता है लेकिन मतलब कि आप कुछ भी आउटडोर एक्टिविटी करना चाहते हैं, उसके लिए सीज़न बेस्ट है. ऑब्वियसली कुछ लोगों को विंटर भी अच्छा लगता है, लेकिन विंटर व्हेन इट गेट्स टू इंटेंस, और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सर्दी इंटेंस नहीं होती, तो यू डू नॉट वांट टू लीव योर ब्लैंकेट ऑब्वियसली. तो मुझे लगता है कि दिस सीजन इज़ द बेस्ट फॉर ऑल योर एक्टिविटीज़. आपने शॉपिंग करनी है, ये सीज़न बेस्ट है. अगर आपने बाहर बैठ के पिकनिक करनी है, एंजॉय करना है, ये सीज़न बेस्ट है. मुझे लगता है कि दिस सीज़न इज़ बेस्ट कि आप कोई ना कोई आउटडोर एक्टिविटी ज़रूर रखें, स्पेशली मतलब कि हैव अ क्यूट पिकनिक, दैट वुड बी सो मच फन. तो दिस इज़ नंबर वन कि you can make your fall different from summer and winter, can you can do all the outdoor activities you always wanted to do. With that you can also wear किसी भी तरह के कपड़े. और मुझे लगता है कि स्प्रिंग और ऑटम वो वाहिद सीजन है वेयर यू कैन वेयर किसी भी तरह के कपड़े, क्योंकि यू कैन वेयर योर शिफॉन, यू कैन वेयर योर सिल्क, जो कि शर्ट्स आपको ओके, ओ आई हैव दीज शर्ट्स लेकिन आई कांट वेयर इट एट समर, और ऑल्सो आई कांट वेयर इट एट विंटर. विंटर में आपको ज़्यादा लेयरिंग करनी पड़ती है एंड दैट्स नॉट क्यूट समटाइम्स. ऑब्वियसली यू कैन मेक इट क्यूट, लेकिन कभी कभी बंदा ज़्यादा लेयरिंग से भी थक जाता है. समर्स में आपको ऑब्वियसली आप इतने ज़्यादा मतलब कि आप कुछ मटेरियल्स बिल्कुल भी नहीं पहन सकते क्योंकि इट्स हॉट. तो इस वजह से मुझे लगता है कि फॉल इज़ द राइट टाइम कि अगर आपने समर कपड़े पहनने हैं, आप समर वाले कपड़े पहन लो. किसी ने अगर हुडी पहननी है, वो हुडी पहन ले. ऑब्वियसली आजकल हुडी वाला मौसम नहीं है, लेकिन देयर लाइक फ्लीस की अगर पहननी है, फ्लीस पतला होता है ना, आई डोंट नो. अगर आपने पतले कपड़े की मतलब कि आप वो यू कैन डू व्हाटएवर यू वांट. आप सुबह के टाइम हुडी पहन सकते हो, और शाम के टाइम, दोपहर के टाइम आपका दिल चाहेगा कि आपने हाफ स्लीव्स पहना हो. तो इस वजह से मुझे लगता है कि यू कैन वेयर एनीथिंग यू वांट, स्पेशली द सिल्क्स एंड शिफॉन्स दैट आर इन योर क्लोजेट एंड यू थिंक दैट यू वुड नेवर वेयर इट, यू कैन वेयर इट. यू कैन आफ्टर अ व्हाइल यू कैन वेयर स्वेट शर्ट्स, और ऑब्वियसली अगेन आपको विंटर में लेयरिंग करनी पड़ती है, तो आप स्वेट शर्ट्स विंटर में उस तरह नहीं पहन सकते आउटडोर. ऑब्वियसली आपको ऊपर कुछ ना कुछ पहनना पड़ता है. यू कैन वेयर स्वेटर्स जो कि पतले हैं और दैट आर नॉट दैट हॉट. और मुझे लगता है कि यू कैन वेयर ऑल दोस क्यूट क्लोथ्स जो कि आप विंटर में नहीं पहन सकते, क्योंकि आपको विंटर में आपको कवर्ड रहना पड़ता है और आपको सब कुछ कवर करना पड़ता है. तो मुझे लगता है कि फॉल इज़ ऑल्सो एन अमेजिंग टाइम वेयर यू कैन वेयर anything you want. Now, speaking of clothes, I personally love attaching a color palette with every season. कि I love wearing pastels in summer, और जब spring होता है तो I am so excited to wear colors और yellow और pink और वो सब कुछ. Now for winter I have a color palette different, और fall I have a color palette different तरह की. जब भी
विंटर के बाद वी आर गेटिंग इनटू स्प्रिंग, तो आई एम सो एक्साइटेड टू वेयर कुर्ता और ट्राउजर और ईस्टर्न कपड़े, क्योंकि आपने पूरे विंटर वो पहने नहीं होते, क्योंकि यू कैन नॉट रियली वेयर दोज क्लोथ्स इन विंटर, क्योंकि यू कैन नॉट लेयर देम, और आप ऊपर स्वेटर पहन के अजीब लगते हैं, मतलब कि यू कैन नॉट वेयर ईस्टर्न क्लोथ दैट मच इन विंटर। तो इस वजह से वेन एवर स्प्रिंग इज अप्रोचिंग आई एम रियली एक्साइटेड टू वेयर कलर्स एंड टू वेयर कुर्तास, पजामा, सलवार, दुपट्टे। तो इट मेक्स मी रियली एक्साइटेड। और सिमिलरली जब हम वाइस वर्सा एक्चुअली ऑपोजिटली जब हम समर से फॉल में जा रहे होते हैं, तो आई एम रियली एक्साइटेड टू वेयर जीन्स एंड पैंट्स एंड शर्ट्स, अपनी बटन डाउन शर्ट्स, फ्लैनल्स, चेक शर्ट्स, ऑल ऑफ दैट, ओके। तो इस वजह से मुझे लगता है कि इस वजह से स्प्रिंग और ऑटम आर, मतलब कि डिस्टिंक्टली ऑपोजिट्स, के उसमें आपका डिफरेंट मूड होता है। देयर इज़ अ डिफरेंट मूड बोर्ड फॉर स्प्रिंग एंड देयर इज़ अ डिफरेंट मूड बोर्ड फॉर ऑटम। सो इस वजह से फॉर मी ऑटम कलर्स आर द अर्थ टोन्स। आई विल शेयर ऑन माई इंस्टाग्राम स्टोरीज एक्चुअली के अर्थ टोन्स कौन से कलर होते हैं, लेकिन माई फेवरेट कलर फॉर ऑटम इज़ ग्रीन। आई लव ग्रीन कलर, मुझे लगता है ग्रीन इज़ अ फॉल कलर। और मुझे लगता है कि हर तरह का शेड ऑफ ग्रीन इज़ अ फॉल कलर, लेकिन ज़्यादा ब्राइट या लाइट ग्रीन नहीं। लेकिन द अर्थ कलर, मतलब इसलिए मैं कह रही हूँ अर्थ टोन्स, क्योंकि मुझे लगता है कि मतलब कि व्हेन यू विल लुक अप फॉर अर्थ टोन्स इन प्रिंटर्स यू विल नो एग्जैक्टली व्हाट आई मीन। ग्रीन इज़ अ फॉल कलर। दोज रस्ट शेड ऑफ रेड, जो कि रेड और ऑरेंज और जो है वो ब्राउन के बीच बीच में होते हैं, लाइक नॉट दैट ब्राइट रेड, लेकिन नॉट टोटली ऑरेंज, और देयर इज अ हिंट ऑफ brown too. I love that shade so much, or that shade of red is literally fall. Or you can, it's also called lust color, lust. It's also called rust color. I have seen some people calling it cider. You can look up for it on Pinterest के earth red color. It's also called earthy red color. So you guys will know what exactly I'm talking about. Mustard is also a fall color. मतलब I think it's a fall color. I think the color that are not fall is blue. ठीक है, blue is not fall for me, और इस वजह से मैं कभी भी blue नहीं लेती। Let me know if you guys agree with me. I think brown color is obviously fall, ठीक है, और every single shade of brown is fall, लेकिन मुझे लगता है कि जो beige और fawn और off white color हैं they are more winterish, और मैं उनको fall नहीं consider करती। मुझे लगता है कि brown is also winter, लेकिन brown is also fall, और brown is more fall। तो brown is fall और mustard is fall, और मैं mustard कह चुकी हूँ, maroon is fall, और what else is fall? I पता कि you guys get the palette right। मुझे लगता है कि a bit of orange red, मतलब coral shade, that color is also fall। So I hope this gives you guys some sense of what I try to say when I say कि fall colors, and obviously you guys do not need to buy anything new। आपके वार्डरोब में ही कोई ना कोई ऐसा कलर होगा, और अगर नहीं है तो हु केयर्स, कुछ नहीं होता। लेकिन अगर है तो मतलब कि इट वुड बी नाइस टू वेयर इट एंड से कि ओ माय गॉड आई एम ऑन थीम विद फॉल और ये सब कुछ, क्योंकि मेरे पास ये नहीं है कि बस मेरी फॉल आता है तो मेरी वार्डरोब पूरी चेंज हो जाती है, लेकिन आई ट्राई टू वेयर दोज कपड़े मोर जिसमें वो फॉल के कलर की हिंट आ रही है। तो I'll share the earth colors too on my Instagram story. You can search it on Instagram too, Pinterest too. You can follow me on Pinterest too. I have a whole like a board of color palettes. Like, and I love having colored palettes for every single season. And for me, fall colors are earth tones. And I explained what earth tones are. और मेरे ज़हन में अब कोई नहीं आ रहा. I think these are the earth tones that, और उनके different shades, because there's a variety of shade of every single color I mentioned. Fall is the best season to start a new hobby, क्योंकि अगेन ये मुझे लगता है कि इवन विद स्टडी, मेरी हमेशा इस टाइम में आई वॉज रियली गुड विद माई स्टडीज़, और मैं हर चीज़ रोज़ का काम रोज़ कर रही होती थी, वो सब कुछ कर रही होती थी, क्योंकि मुझे लगता है कि यू आर रियली मेंटली प्रेजेंट इन फॉल, क्योंकि मुझे लगता है कि वेन एवर यू आर starting your fall semester it feels like a new era, it feels like a new phase। और मुझे मतलब कि again I shared this पहले भी, लेकिन डेफिनेटली सितंबर और अक्टूबर फील्स लाइक अ न्यू फेज ऑफ लाइफ, और इट फील्स मोर
new than January feels, और आपको लगता है कि you're in this new phase of life and you want to put your life together and have your shit together and do this and that, तो मुझे लगता है कि this time is really good to adapt a new hobby or a skill that you always wanted to do, क्योंकि it's there is a probability कि you are high on your motivation. जैसे आई स्टार्टेड निटिंग, वो अलग बात है कि मैंने बस एक दिन किया और उसके बाद वो 2 हफ्ते से चीज़ वहीं पड़ी है, लेकिन एटलीस्ट आई स्टार्टेड एंड आई एम प्लानिंग टू कंटिन्यू, लेट्स होप कि वी कंटिन्यू. लेकिन जैसे आई स्टार्टेड निटिंग, और with books I think if you want to start reading books, this season is really good to start reading books, क्योंकि गर्मी में it's not that enjoyable honestly. I want to stay in fiction, इस वजह से मैं पढ़ती रहती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि गर्मी में इट्स नॉट दैट एन्जॉयबल. मज़ा विंटर्स में तो बहुत मज़ा आता है, और फॉल में यू कैन लाइक स्टार्ट रीडिंग बुक्स or you can start baking stuff. I think baking is one of my favorite activities to do in fall and winters. Again, winter में you're not that active and you want your food कि आपका बस blanket में आ जाए home delivery वाला खाना, तो you are not active enough to do all of these things, so you have to do all of these things in fall, ताकि विंटर में आप बस चिल कर सको और आराम से अपनी सीजन्स देखो और अपना बुक्स पढ़ो और पूरा फिक्शन में डूब जाओ. ऑब्वियसली विंटर में भी आप वो सब कुछ कर सकते हो जो आपने करना है, लेकिन मुझे लगता है कि फॉल में यू आर मोर एक्टिव. तो विद बेकिंग आई लव टू बेक, और मैंने मतलब जब फॉल स्टार्ट हुआ था तो मुझे लगता है कि द फर्स्ट थिंग आई डिड वाज टू मेक अ पाई, क्योंकि मुझे लगता है फॉर मी baking is something that really makes me happy. Not that I'm baking every single day, or not that I'm very professional, लेकिन it's something that I feel like, I don't know, it makes me feel really good. So I'm planning to make donuts and cinnamon rolls और वो सब कुछ. And if you guys are purchasing donuts or cinnamon roll बाहर से, तो they are like pretty expensive, तो घर पे they are not that costly too. तो इस वजह से I love baking, क्योंकि I want to eat those things, लेकिन they're so expensive, so I can just make it at home and have fun, and it gives me fall vibes, and मतलब कि it gives me the romanticized life वाली approach. तो इस वजह से I really love baking. I think it's a very beautiful thing. I don't know. The other day मुझे है कि I want to start making breads. I want to start making breads and I want to start making pasta from scratch. Basically मैं चाहती हूँ कि मेरे पास किचन का every single ingredient हो, और I want to make every single thing from scratch. मैं आजकल इतनी वीडियोस देख रही हूँ people making sourdough bread और दूसरी ब्रेड और हर तरह की ब्रेड, एंड आई एम लाइक ओ मुझे भी बनानी है ब्रेड. आई वांट टू मेक ब्रेड एट होम, बाहर से नहीं लेनी, मुझे घर बनानी है. Pastas, I see people making pastas. Now pasta is not a baking thing. Like I see people making pasta and it's so easy. You just mix egg and flour and आपका pasta बन जाता है. तो I'm like, oh, we should not get pasta. बाहर से I want to make pasta घर पे. तो मुझे लगता है it's very like cottage core or fall vibes. तो I think कि even though अगर आप वैसे technically देखो, तो इट्स नॉट दैट फन. और इफ़ आई हैव द सेम अप्रोच रोटी बनाने के लिए, तो शायद मुझे रोटी बनाना भी फन लगे. लेकिन सम द थॉट अबाउट इट, द वे आई सी पीपल इन रील्स कि वो बना रहे हैं और पीछे एक जैज म्यूजिक चल रहा है एंड दे आर मेकिंग ब्रेड, और यू आर वॉचिंग इट एंड यू आर लाइक ओ माई गॉड आई वॉन्ट टू लिव दैट लाइफ टू. तो इस वजह से मुझे लगता है कि बेकिंग इज़ रियली लाइक फॉर मी व्हेन आई बेक, मुझे लगता है कि आई एम एट लाइक द टॉप ऑफ रोमांटिसाइजिंग माई लाइफ. There's another word instead of top. I'm at the peak of romanticizing my life. तो इस वजह से I personally really find joy in baking, or I think कि baking is a very fall stuff. You can make cinnamon rolls, you can make apple apple pie, or the other day my mom brought a pumpkin. Actually my mom gave me the choice कि हम उसकी bread भी बना सकते हैं, कुछ ऐसा भी बना सकते हैं, whatever you want, or we can make halwa. लेकिन I knew कि my dad would appreciate a halwa more, तो we opted for halwa. और texture wise कद्दू का हलवा is really good, it's very comforting or it's good. So I was like sure हलवा बनाते हैं. I do think a lot of times I enjoy things क्योंकि I'm like oh I get to share it with people, और मैं पोस्ट अपनी स्टोरी पे लगाऊंगी. I don't think it's a flex क्योंकि आई डू नॉट, क्योंकि आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग दैट एनीवन एल्स कांट डू. तो इस वजह से मुझे लगता है आई एम जस्ट इंजॉइंग इट. और मुझे लगता है कि इट रियली डज मेक अ डिफरेंस. और मैंने प्रोडक्टिविटी पे भी ये कहा था कि वेन एवर
यू आर पोस्टिंग समथिंग, और इवन अगर आप अपने फ्रेंड सर्कल में भी कर रहे हो, आप ट्विटर में भी कर रहे हो, ज़रूरी नहीं है कि आपका पब्लिक अकाउंट ही हो, लेकिन इफ़ you want to share things on social media and you're sharing, oh, I'm baking, or I'm doing this, or you're making cute reel, or you are documenting the little moments in your life, और आप उनकी रील बना के लगा रहे हो, तो and if that makes you happy, then that makes you happy, you should do it. I think for me posting stories really gives me motivation. Even जब मैं I am reading book, I am excited to read it and to tell you guys कि how I feel about that book. When I'm watching a movie, I'm excited to watch it and tell you guys के how I felt about the movie. जब मैं कुछ bake कर रही होती हूँ तो it makes me excited कि I'll post about it and tell कि oh I did this. Or even when I'm arranging my wardrobe, I am excited कि मैं पहले उसकी before की picture लूँ और फिर मैं after की picture लूँ. That's what motivates me. So if this thing motivates you too, तो I think that you should really try that. And it's not like कि आपको पब्लिक अकाउंट ही बनाना है या फिर ऐसे ही करना है, अपने बस दो चार कंफर्ट लोगों में शेयर करिए और करें, क्योंकि कोविड में ये होता था कि हम चार दोस्त आपस में एक दूसरे को स्नैपचैट पे व्लॉग्स भेजते थे, और इट वाज जस्ट अस, लेकिन इट वाज सो एक्साइटिंग, इट वुड मेक मी मोटिवेटेड टू डू समथिंग. वो मेरा देखते थे, मुझे एंटरटेनमेंट मिलती थी, मैं उनका देखती थी, वी वर कनेक्टेड विद ईच अदर एंड वी वर हैविंग फन. जो भी लोग आपकी इस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं उनके साथ ये चीज़ शेयर करें, यू विल हैव फन टू, इफ इट्स समथिंग दैट कुड एक्साइट यू. देन मुझे लगता है कि fall is a very good season to get a haircut. I don't know if it's just for me or for you guys too. मैं कभी भी समर में अपने बाल नहीं कटवाती, मैं या स्प्रिंग में कटवाती हूँ या फॉल में कटवाती हूँ. मैं ज़्यादातर फॉल में कटवाती हूँ क्योंकि एक तो आई लव हैविंग शॉर्ट हेयर्स विद द विंटर एंड फॉल क्लोथ्स. दूसरा ये है कि मुझे लगता है कि समर में बाल कटवाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आप उनको इंजॉय ही नहीं कर सकते. यू कैन नॉट इंजॉय योर हेयर इन समर्स, क्योंकि यू मतलब आप नहीं उनको, आपको उनको बांध के रखना पड़ता है, स्वेटी एंड इट्स ग्रोस एंड वो सब कुछ. तो इस वजह से आई ऑलवेज लाइक वेट फॉर फॉल टू गेट अ हेयर कट, एंड हेयर कट रियली मेक्स मी एक्साइटेड. और आई लव गेटिंग माई हेयर शॉर्ट, और मेरे बाल इतने कभी लंबे हुए भी नहीं, इस वजह से आई एम सो एक्साइटेड फॉर फॉल every year क्योंकि I get to get my hair short and I love getting my hair short. I'm gonna get layers this time. मैंने पिछली बार भी लेयर्स की थी, एंड पहले मैं बॉब कट कराती थी और फिर मैंने पिछले साल लेयर्स करे. आई रियलाइज कि लेयर्स रियली गिव अ स्ट्रक्चर टू माई फेस. तो इस बार भी आई एम डूइंग लेयर्स, लेकिन दे आर अ बिट डिफरेंट. Really excited for it, really looking forward to it. I'll obviously show you guys on Instagram. Like, if you guys want some change in your life, तो obviously you can do a haircut. अब now I can do a haircut anytime, या मैं ऐसे ही कुछ सोचे बगैर भी कर सकती थी, लेकिन the idea of oh no I'll get a haircut in fall is like I am romanticizing fall, क्योंकि I have selected this thing in fall that makes me excited कि मैंने एक चीज़ fall के लिए रख दी जो मुझे excite करती है. I think that's the last thing क्योंकि I don't know what else to say, क्योंकि I do not want to say कि oh ये कर लो वो कर लो और मैं खुद वो चीज़ें नहीं कर रही. These are literally like the only things that I'm doing, and I wanted to include the things जिसमें इतना नहीं है कि you have to pay a lot or do stuff, क्योंकि I personally am not doing that. मैं daily chores में वही काम कर रही होती हूँ जो मैं वैसे भी कर रही हूँ. I'm just having a different approach with it. लेकिन the last one is a bit, it's a materialistic thing. बाकी सभी material I don't know, मतलब कि it's an object and it is a thing you purchase. लेकिन scented candles, I cannot burn a scented candle in summer क्योंकि पंखा चल रहा होता है और आप पंखे में scented candles नहीं burn कर सकते. इस वजह से I'm really excited for fall and winter क्योंकि you can have your scented candle. I love having scented candle on. It really like मतलब it charges me. और जब मैं स्पेशली काम कर रही होती हूँ, I love having scented candle on while I'm on decks, while I'm editing or working or doing anything, or even when I'm reading or doing something. So if you can get something, if you want to get something for pleasure, you can get a scented candle. It's not like a useful thing or it's not a necessity, लेकिन इट मेक्स यू फील गुड. और देयर इज़ दिस कंपनी कैंडल एंड को, उनकी बहुत सस्ती होती हैं. लास्ट टाइम तो मैंने 500 की मंगवाई थी, इस बार उन्होंने 700 की कर दी है. माई फ्रेंड हैज़ अ सेंटेड कैंडल बिजनेस, इट्स कॉल्ड शमा कैंडल कंपनी आई थिंक. और आई हैव पोस्टेड अबाउट इट टू, मतलब इट्स कॉल्ड शमा, यू विल फाइंड द पेज. शी इज़ ऑल्सो लाइक सेलिंग सेंटेड कैंडल्स, सो यू कैन ऑर्डर फ्रॉम हर टू. मेरे पास एक्चुअली अभी वनीला है, और वनीला इज़ सच अ गुड फ्लेवर फॉर फॉल. तो इफ़ यू आर
if you are ordering from Candle and Co, तो उनका, और आपको अभी फ्लेवर्स का इतना नहीं पता, फ्लेवर्स ही है ना, सेंट्स, फ्लेवर्स, और अगर आप माय लैपटॉप वाज अबाउट टू फॉल ऑफ, लेकिन वी आर फाइन। और अगर आपको सेंट्स का अभी इतना नहीं पता तो फिर ऑर्डर वनीला और कोको बटर, ऐसा कुछ करके। क्षमा से, अगर आपने कराना है तो ऑर्डर कोको बटर। So these are my two flavor recommendation for scented candle. Like in scented candle is, it's a very aesthetic thing. You can make it at home too, by the way. I think you, मतलब obviously you can make it at home too. Or उससे it would be so much more cheaper. So you can make it at home too. लेकिन you can order too. क्योंकि I tried making it at home and I failed. It's not that difficult. I'm just a loser. तो इस वजह से you can make it at home too. लेकिन it's a thing that could really give you pleasure, or it's a good gift if you want to gift someone something. It's also a really 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 good gift, and it give you fall vibes. So it's like, okay, you are creating the fall vibes yourself while doing outdoor activity, or wearing the outfits you cannot wear in the other season, or wearing the color, or changing your hairstyle, or baking stuff. So these are the things that you are doing yourself to make the whole thing fallish, fallish, to make the whole thing fall vibes. ऐसा नहीं होगा कि someone will come up and make the, मतलब कि आपको fall vibes आना शुरू हो जाएंगी. You have to like put in the effort, you have to do stuff. I watch a lot of YouTubers, और मुझे लगता है कि this time is the best time to watch YouTube. They make the whole like vlogmas series जिसमें they are showing every single day until Christmas, and उसमें वो दिखा रहे थे their Christmas shopping and वो सब कुछ, और that is so entertaining for me क्योंकि they are mostly lifestyle vlogs. So they'll show you they're cleaning, or they're buying gift, और वो ये कर रहे हैं और वो कर रहे हैं, और that would motivate you to do stuff too. So if you guys want to get entertained and also want motivation and positivity, I will literally recommend you to watch YouTube so much. The lifestyle vlogs are so amazing. You will watch them and you will feel motivated to make your life like that too. You'll see that they're doing their work, and they're mopping, and they're organizing, or they're running errands, they're doing grocery, or वो सब कुछ देखे, that makes you motivated to do that too. तो इस वजह से watch YouTube for motivation. If you want YouTube recommendation, then hit me up. My favorite YouTuber is Alicia Marie. That's it. I hope कि you guys gained something from all of this. Obviously मेरे शुरू के rant में तो कोई gain और कोई कुछ नहीं था, लेकिन बाद में से if you liked something, then that means a lot to me. Even if you don't, you're listening to it, so it's fine, it's nice. Listen to my podcast. It's also very fall vibes. Obviously मेरे podcast का जो theme है वो brown है, and brown is fall. So this podcast is one of the perfect things you can do in fall, and it will give you fall vibes, or you'll feel motivated and happy, or like all of the good stuff. Or also you guys can connect to me on social media. It's Rabia is a mess on Twitter, and it's Rabia, it's the brown girl rants on Instagram. And I am very active on both apps. You can also follow me on Goodreads, and it's Rabia is a mess on Goodreads. And you can also follow me on Letterbox, and it's brown girl rants on Letterbox. And you can also follow me on Reddit. मैं वैसे कुछ करती नहीं हूँ, मैं जब स्टक हो जाती हूँ अपनी ज़िंदगी में और मुझे कोई फैसला लेना होता है, तो आई रियली ट्रस्ट रेडिट के मशवरे सो मच, और फिर मैं देखती हूँ कि व्हाट रेडिट हैव टू से अबाउट इट. तो या आई एम ऑन ऑल द यूजलेस एप्स, और मुझे वो एप्स ज्वाइन करने का बहुत शौक है जिसमें मुझे पता है कि कोई भी इंसान जिसको मैं जानती हूँ वो नहीं है, विद गुड रीड्स एंड लेटर बॉक्स. लेकिन दैट जोक्स अबाउट, ऑब्वियसली listen to my podcast, listen to other podcasts too. I think podcast is a very good thing. I love listening to fictional podcast. और जब भी whenever winter आता है, whenever winter आता है, जब भी winter आता है, जब भी सर्दी आती है, जब भी थोड़ा अच्छा chilly breeze होना शुरू हो जाती है, तो I really listen to like fictional podcast while working क्योंकि it's so exciting and so fun to hear. तो इस वजह से if you guys want to, I would love, मतलब कि it's not for my podcast, लेकिन I would love you guys to listen to more podcasts. It's so much fun. So yeah, that's it for the episode. Subscribe to the channel, or there's YouTube Music just introduced podcast, and I'm procrastinating to upload my podcast on YouTube Music. लेकिन hopefully we'll do it soon क्योंकि I want to be there, और शायद मुझे उससे कोई I could earn a money or two. I would really want to do that. So if you are listening to it,
तो look forward for my YouTube like music पे channel जिसमें मैं अपनी podcast upload कर सकूँ and then switch to that to listen to it क्योंकि there is a high chance कि I could earn something out of it and I would love to earn something out of it. फिर I'll get a good mic and a good intro and outro music. I'll get it composed by someone because I really don't like the intro and outro music of this. So I'll like make the podcast better for you and I'll get guest और वो सब कुछ. तो इस वजह से you have to like subscribe to me on YouTube. अभी मैंने वैसे बनाया नहीं, I don't know मैंने कब बनाना है, लेकिन look forward to it. Okay, I'll let you guys know जब मैं बनाऊंगी और फिर उस पर switch कर जाना ताकि मैं कुछ कर लूँ, मतलब कुछ मैं अपनी ज़िंदगी में कर सकूँ. Anyways, I love you guys so much. Or see you guys soon. I hope you guys can have an amazing fall. Or please, अगर आप लगता है कि you want to share about your fall or what you're doing for fall to about fall to someone and you do not have someone, so I'm there. I'll see you. I'll validate you and I am interested to know और मुझे जानना है और मुझे सुनना है और मुझे सब कुछ करना है क्योंकि अगर you guys are listening to me for an hour तो I can listen to you too. So like hit me up if you're a girl, not a guy. Bye.